In this module, we will study DNA-based methods for detection of different diseases. DNA-based diagnostic testing involves detection of a specific nucleotide sequence. For example, determination of to check whether an individual contains a certain mutation or not, and in this method, through this method, we can also detect the presence or absence of certain pathogens in a patient sample. This is highly sensitive and specific test because we are detecting, the detection is being made on the basis of specific interaction between two DNA strands. You will see in the next figure. We can apply these kind of tests for determining the cause of an illness, and beside this, DNA-based diagnosis can be applied for diagnosing genetic diseases in the offspring. यानी बेबी अभी पैदा नहीं हुआ और जस्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो वहाँ से हम बेबी का डीएनए लेके हम डिटरमिन कर सकते हैं कि इसको फ्यूचर में कोई जेनेटिक डिजीजेस तो नहीं होनी. Applications for DNA-based tests. First is identification of asymptomatic carriers of hereditary diseases. कुछ genetic diseases ऐसी होती हैं जो जिनमें अभी पेशेंट के अंदर symptoms appear नहीं हुई, तो DNA टेस्टिंग की मदद से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये पेशेंट इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस हैं तो नहीं और कहीं इसको फ्यूचर के अंदर डिजीज होने का खतरा तो नहीं है. इसके अलावा हम प्री नेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं जेनेटिक कंडीशंस की. ये जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बेबी के बर्थ से पहले हम डिटरमिन कर सकते हैं वेदर ही और शी इज गोइंग टू गेट सम डिजीजेस और नॉट. और इन टेस्ट्स की मदद से हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, यानी अभी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई और हम डीएनए टेस्टिंग की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं वेदर दिस पर्सन इज एट रिस्क और नॉट. इस तरह की जो टेस्टिंग है ये 4 डिफरेंट तरीकों से की जा सकती है. First one is DNA probe, utilization of DNA probe. I will explain this by a figure which is coming in the next slide. उसके अलावा एक दूसरा तरीका ये है कि हम जो हमारा टारगेट डीएनए है उसको हम एक टेक्निक है पीसीआर, उसके जरिए एम्पलीफाई कर सकते हैं, and in this way we can detect the presence of diseases. Another approach is microarray, and the power of microarray is that in a single run, in a single assay, we can detect multiple presence or absence of multiple sequences in patients' samples. Another approach is application of mass spectrometry for determination of SNPs, that is single nucleotide polymorphism. To detect diseases on the base of DNA, one of the approach is the application of probes. Probes में हम क्या करते हैं? We detect a target DNA by applying another short DNA stretch. That DNA stretch specifically binds with the target DNA, and in this way we know the presence or absence of this DNA. I show you this with the help of the figure. इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा टारगेट डीएनए है जो हमने बेसिकली डिटरमिन करना है कि ये पेशेंट के अंदर मौजूद है या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो वी गिव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, फॉर एग्जांपल अल्कली ट्रीटमेंट, और उसके नतीजे में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक प्रोब ऐड करते हैं, दिस वन. ये प्रोब बेसिकली डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रेच है. इट कैन बी 50 to 150 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ. ये हम टारगेट के अगेंस्ट स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं, यानी अगर हमारा टारगेट डीएनए उस सैंपल के अंदर मौजूद हुआ जैसे इस केस में है, तो हमारी प्रोब जाके उस टारगेट के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए बाइंड कर जाएगी. डिटेक्शन के लिए कि whether probe has bound with its target or not, this probe is labeled with certain molecules, certain chemicals. अगर प्रोब बाइंड करेगी
तो वो जो फ्लोरोफोर साथ एडेड है, वो जो मार्कर साथ एडेड है, उसकी फ्लोरेसेंस की मदद से या उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं द बाइंडिंग ऑफ द प्रोब। इस केस में प्रोब वाज बाउंड with a compound known as digoxinine, or binding to confirm the binding of the probe on the target हमने primary antibody add की. This primary antibody specifically binds with this molecule, detects this molecule. To further confirm the binding of the primary antibody on the target, we added a secondary antibody. ये concept में वही चीज है जैसे ELISA के केस में आपने देखा था. Secondary antibody is labeled with an enzyme, for example, and that enzyme converts its colorless substrate into a colorful compound, and we can detect the presence of this color. उसके अलावा प्रोब सिंपली जो है वो फ्लोरेसेंसली लेबल भी हो सकती है, यानी सिंपल अगर हमने चेक करना है कि हमारी प्रोब ने टारगेट पे बाइंड किया है कि नहीं, हम सिंपली उसकी फ्लोरेसेंस डिटरमिन कर लें. इफ देयर इज फ्लोरेसेंस, इट मींस आवर टारगेट डीएनए इज प्रेजेंट. There is another example of DNA-based testing, and that is about diagnosing malaria. Malaria is caused by a parasite known as Plasmodium falciparum. In order to identify this parasite with the help of DNA testing, we need a probe. और ये probe ऐसी होनी चाहिए जो specifically जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है सिर्फ इसके डीएनए पे जाके बाइंड करे. यानी हमने एक ऐसा सीक्वेंस लेना है जो स्पेसिफिकली, जो बहुत स्पेसिफिक हो, जो सिर्फ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के अंदर हो. तो ये प्रोब बनाई गई और पहले इस प्रोब को टेस्ट किया गया कि वेदर दिस इज स्पेसिफिक और नॉट. इसके लिए, इसकी स्पेसिफिसिटी चेक करने के लिए डीएनए लिया गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का, और साथ साथ जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड सो ऑन, वो भी लिए गए और इस प्रोब को टेस्ट किया गया, इस प्रोब की बाइंडिंग को टेस्ट किया गया. दिस प्रोब वाज बाइंडिंग स्पेसिफिकली ऑन द डीएनए ऑफ प्लाज्मोडियम falciparum, but not on the DNA of closely related relatives of the Plasmodium falciparum, and neither it was binding on the human DNA. So इस तरह ये जो प्रोब थी स्पेसिफिक, this was utilized for the specific detection of the Plasmodium falciparum in the patient's sample.